The new topic of the chapter application of derivatives is tangents and normals. Okay, the tangents and normal. The differentiation is to use find the tangents and normals. The equation of tangent and normal. The equation of straight line passes through the point x0 and y0 is y minus y naught equal to m x minus x naught. The slope of the tangent to the curve y is fx. M is the slope, it is the fx at the point x naught y naught. So we can write the differentiation of y dy over dx at the point x naught y naught is equal to f dash x naught. यानी अगर हमको टेंजेंट निकालना है तो टेंजेंट क्या होगा? स्लोप, किसी भी लाइन का स्लोप, ये टेंजेंट है तो किसी भी पॉइंट पर हम लोग लेंगे x नॉट y नॉट पॉइंट पर तो dy ओवर dx लेंगे एट पॉइंट x नॉट. तो इक्वेशन ऑफ द स्ट्रेट लाइन बिकम्स y माइनस y नॉट इक्वल टू f डैश x नॉट, यानी डिफरेंशिएशन ऑफ f एंड x माइनस x0. द इक्वेशन ऑफ नॉर्मल टू द कर्व, ये तो टेंजेंट की इक्वेशन है, और अगर नॉर्मल की निकालेंगे तो वो क्या हो जाएगा? -1 अपॉन एफ डैश एक्स नॉट, वाई माइनस वाई नॉट इंटू एफ डैश एक्स नॉट प्लस एक्स माइनस एक्स जीरो इक्वल टू जीरो. दिस इज द इक्वेशन ऑफ स्ट्रेट लाइन विद द नॉर्मल. द स्लोप ऑफ द टेंजेंट यानी टेन थीटा इक्वल टू डी वाई ओवर डी एक्स. अगर स्लोप टेंजेंट जीरो है, अगर स्लोप क्या है? जीरो है, यानी टेन थीटा अगर जीरो है तो इसका मतलब क्या होगा? टेंजेंट इज पैरेलल टू एक्स एक्सिस. इफ थीटा इज इक्वल टू पाई बाई टू यानी 90 डिग्री एंगल है, टेन थीटा टेंस टू इन्फिनिटी, और टेंजेंट इज परपेंडिकुलर टू द एक्स एक्सिस और द पैरेलल टू वाई एक्सिस. सेम चीज है, अगर एक्स एक्सिस पर परपेंडिकुलर है तो पैरेलल टू द वाई एक्सिस. यहाँ पर अगर परपेंडिकुलर शो करेगा तो ये पैरेलल टू वाई एक्सिस. ओके, नाउ द exercise 6.3 related to this topic, tangents and normals. Okay, exercise 6.3 question number 1, find the slope of tangent to the curve y equal to 3 x raised to power 4 minus 4x at x equal to 4. Okay, so first we have to find the dy over dx at x equal to 0. This is the tangent. Y equal to 3x raised to power 4 minus 4x. Now slope of the tangent. Slope of the tangent is dy over dx. It is equal to the dy over dx equal to d over dx of it is equal to the 12x cube minus 4. Okay, and the slope of tangent at point x equal to 4. It means dy over dx at x equal to 4. It means 12 into 4 cube minus 4. Okay, now solve 12 into 64 minus 4, it is equal to the 764. This is the slope of tangent at point x equal to 4. Question number 2, find the slope of the tangent to the curve y equal to x minus 1 upon x minus 2. X is not equal to 2 at x equal to 10. The same question, first the differentiate, then put x equal to 10. Y equal to x minus 1 upon x minus 2. Differentiation. For the slope we find the differentiation. The formula is denominator and differentiation of numerator minus numerator and differentiation of denominator divided by denominator square. Okay, so it is equal to the x minus 2, differentiation of x is equal to 1 minus x minus 1. X cancel, minus 2 plus 1, it is equal to the minus 1 upon x minus 2 whole square. अब slope of the tangent at, this is the slope,
slope of tangent at point x equal to 10. It means just put the value x equal to 10. Now dy over dx minus 1 upon 10 minus 2 whole square. It means 8 square minus 1 by 64. This is the slope of tangent at point x equal to 2. Question number 3. Find the slope of the tangent to a curve y equal to x cube minus x plus 1 at the point whose x coordinate is 2. Okay. X coordinate is 2, it means x equal to 2. Y equal to x cube minus x plus 1. Now slope, it means dy over dx, it is equal to the 3x square minus 1. Differentiation of this is, and the slope of tangent at point x equal to 2. X coordinate is 2 means x equal to 2. Slope of the tangent at point x equal to 2. It means 3 into 2 square minus 1. 4, 12 minus 1 is 11. Simple question, just find the slope tangent and the at point x equal to 2. Question number 4. The question of 4 is, find the slope of the tangent of the curve y equal to x cube minus 3x plus 2 at the point whose x coordinate is 3. The same question. Okay. Now find, बनाते हैं इसको, same है. Y equal to this, it means slope of tangent. Slope of the tangent dy over dx. It is equal to the d over dx of it is equal to the 3x square minus 3. Okay. Now slope of the tangent at the point x equal to 3. Slope of the tangent at the point x equal to 3. Just put 3 into 3 square minus 3. 9 here 27 minus 3 equal to 20. This is the answer. Question number 5. Find the slope of normal to the curve x is equal to a cos cube theta, y equal to a sin cube theta at theta equal to pi by 4. Now the normal equation is, normal is dy over dx minus 1 upon. Okay. So first we find the dy over d theta. dx over d theta, dy over d theta दोनों पता करेंगे, डिवाइड करेंगे तो dy over dx. Okay. X equal to a cos cube theta. First differentiate x with respect to theta. It means d over d theta of a cos cube theta. So it is equal to the a cos square theta and d over d theta of cos theta. It is equal to the minus a sin theta and cos square theta. Okay. Now find dy over d theta. d over d theta इक्वल, इसका भी निकाल लेंगे डिफरेंशिएशन और डिवाइड करेंगे. a sin स्क्वायर थीटा एंड d over d theta of sin theta. It is equal to the a sin square theta and cos theta. Okay. Now find dy over dx. It means divide dy over d theta divided by dx over d theta. A sin square theta cos theta divided by minus a sin theta cos square theta. Okay.
Now divide a cancel, minus sin theta upon cos theta. It is equal to the minus tan theta. Okay. Now slope of the tangent at theta equal to pi by 4. The slope of tangent. Slope of the tangent at theta equal to pi by 4. It means dy over dx is equal to minus tan pi by 4. It is equal to the minus 1. And the normal for the equation, find the normal, the slope of the normal, at theta equal to pi by 4. That is equal to the minus 1 by m. Okay, so minus 1, m is tan pi by 4. Minus tan pi by 4. It is equal to the minus 1 upon minus 1 equal to 1. The slope of the normal is 1 and the slope of tangent is minus 1. Okay. Now question number 6. The question number 6 is find the slope of the normal to the curve x equal to 1 minus a sin theta, y equal to b cos square theta at theta equal to pi by 2. X equal to 1 minus a sin theta. So now first differentiate x with respect to theta. It is 0, 0 minus a cos theta. It is equal to the minus a cos theta. And dy over d theta. It is equal to the 2b cos theta, and differentiation of cos theta is sin theta, minus sin theta. Just put minus here. Now find dy over dx. Dy over d theta divided by minus 2b cos theta sin theta divided by minus a cos theta. It is equal to the 2b sin theta upon a. Okay, this is the normal, the slope of the normal, slope of the tangent. Slope of the tangent at point theta equal to pi by 2. अगर पाई बाई 2 पर निकालना है तो हमको स्लोप क्या हो जाएगा 2b साइन पाई बाई 2 बाई a. साइन पाई बाई 2 is 1. It means 2b by a. And the slope of the normal, it is equal to the minus 1 by m. It means minus 1 upon 2b by a. It is equal to the minus a upon 2b. This is the slope of the normal at point theta equal to pi by 2. Okay. This is the question number 6. Now question number 7. Question number 7. Find points at which the tangent to the curve y equal to x cube minus 3x square minus 9x plus 7 is parallel to the x axis. तो हम लोग पहले ही कल पढ़ाए थे कि x axis के parallel it means dy over dx equal to 0. उससे हम लोग पॉइंट्स को फाइंड करेंगे. y equal to x cube minus 3x square minus 9x plus 7. First differentiate dy over dx. It is equal to the 3x square minus 6x minus 9. This is the differentiation. For the point, tangent is parallel to the x-axis. It means tangent is parallel to
x axis. It means dy over dx equal to 0. पैरेलल है तो 0 होगा, tan थीटा क्या हो गया 0. Then 3x square minus 6x minus 9 equal to 0. 3 common, x square minus 2x minus 3 equal to 0. Now differentiate by splitting the middle term. All of you know that minus 3x plus x. So we get x minus 3 and x plus 1 equal to 0. It means x equal to 3 and x equal to minus 1. Now find the tangent from equation 1. This is the equation of the curve. X equal to 3. Then find the y. Okay. Y equal to just put the value x equal to 3. Okay. Y x cube minus 3x square minus 9x plus 7. Put x equal to 3. 3 cube minus 3 into 3 square minus, हमको पॉइंट्स निकालने हैं किस तरीके उस पर है. तो ये हो गया 27 माइनस 27 माइनस 27 प्लस 7. इट इज इक्वल टू द माइनस 20. यानी एक पॉइंट क्या आ गया 3 माइनस 20. x3 y3. Now put x equal to minus 1. Then y equal to minus 1 whole cube minus 3 minus 1 whole. Just put x equal to minus 1. We get minus 1 minus 3 plus 9 plus 7. Okay. Now 5 plus 7 12. The other point is minus 1 12. The answer is 3 minus 20 and minus 1 12. These are the point where the tangent is parallel to the x-axis. Question number 8. Question number 8 is find a point on the curve y equal to x minus 2 whole square at which the tangent is parallel to the chord joining the points 2 0 and 4 4. ऐसा पॉइंट बताना है इस कर्व का कि पैरेलल हो जाए इस पॉइंट को जोड़ने वाली जो कॉर्ड है, इन पॉइंट्स को जोड़ने वाली इसके पैरेलल हो जाए. ओके. y equal to x minus 2 whole square. Let the these are the 2 points. This point is M and this is the N. Okay. Now find the slope of the chord. Slope of chord is equal to y2 minus y1 upon x2 minus x1. This is the formula of finding the chord. The 4 minus 0 by 4 minus 2. It is equal to the 4 by 2. It is equal to 2. Okay. The equation of the curve is y equal to x minus 2 whole square. Now differentiate dy over dx is equal to 2 times x minus 2. This is the differentiation of this. Now the slope of the tangent equal to the slope of the chord. क्योंकि पैरेलल है दोनों का chord क्या होगा सेम होगा. लिखेंगे slope of tangent equal to slope of chord. It means 2 times x minus 2 equal to 2. It means x equal to 2 can 2 से 2 कैंसिल होगा 1 टाइम तो कैंसिल 1 2 minus 3 x equal to 3. Now the point y equal to x minus 2 whole square. This is अगर तो x equal to 2 3 minus 2 पुट जस्ट वैल्यू x की वैल्यू इसमें पुट करेंगे तो क्या आएगा 1. Therefore the required point is x3 y1 3 1. This is the required point. Okay. इस पॉइंट पर
कॉर्ड एंड वो पैरेलल होंगे दोनों. क्वेश्चन नंबर 9. Find the point on the curve y equal to x cube minus x is 11x plus 5. X cube minus 11x plus 5 at which the tangent is y equal to x minus 11. Find the point on the curve. Okay. Y equal to x cube minus 11x plus 5. And the equation of the tangent is y equal to x minus 11. अब इन दोनों से हम लोग स्लोप निकालेंगे. तो पहले से स्लोप क्या निकलेगा? dy over dx. It is equal to the 3x square minus 11. And the slope from this equation, m equal to 1. Y equal to mx plus c से m equal to 1. Now slope is equal to each other. 1, दोनों स्लोप इक्वल है. तो 3x square equal to 12. X square equal to 4. It means x equal to plus minus 2. Now just put in the equation number 1. Y equal to x cube minus 11x plus 5. X equal to 2. Eight minus 22 plus 5. It is equal to the 13 and minus 9. Now first point is 2 minus 9. And when x equal to minus 2, then y equal to minus 2 whole cube minus 11 into minus 2 plus 5. Minus 8, 22 plus 27, it is equal to the 19. Minus 2 and 19. There are 2 points. It means that just check these points lie on this line. 3x square minus 11. 3x square minus 11 equal to 1. Just put this point, these points. 2 minus 9 satisfied this equation. This point not satisfied the equation. Therefore, the required point is equal to 2 minus 9. अगर 2 minus 9 पुट करेंगे 4 या 12 minus 11 equal to 1, ये सेटिस्फाई करेगा. लेकिन अगर इसको करेंगे तो ये सेटिस्फाइड नहीं करता है. ओके. क्वेश्चन नंबर 10. फाइंड द इक्वेशन ऑफ ऑल लाइन्स हैविंग स्लोप -1 that are tangent to the curve y equal to 1 upon x minus 1. इक्वेशन ऑफ ऑल लाइन्स, ऐसी लाइन्स जिनका स्लोप तो -1 आए लेकिन इसी कर्व के ऊपर वो टेंजेंट होनी चाहिए. ओके. y equal to 1 upon x minus 1. This is the equation of curve. Now the tangent of this dy over dx. Differentiation of this is -1. Okay, -1 x raised to power -1 minus 2 or d over dx of x minus 1. The differentiation of dx minus 1 is 1. So we can say -1 upon x minus 1 whole square. This is the differentiation. Okay, it is the slope of tangent. The slope of the tangent given in the question is -1. The slope of the tangent in the given in the question, slope of tangent equal to -1. According to the question, dy over dx equal to -1. -1 upon x minus 1 whole square equal to -1. It means x minus 1 whole square equal to 0. Okay. X minus 1 whole square equal to 1. Now x minus 1 equal to plus minus 1. Okay. X minus 1 whole square equal to 1. X minus 1 equal to plus minus 1. It means x equal to, if plus 1 the value is 2. If minus 1 then x equal to 0. अगर दोनों वैल्यू रखेंगे +1 रखेंगे तो क्या आएगा? 2 आएगा. यहाँ लिख देते हैं इफ x इक्वल टू 1, ओके, देन x इक्वल टू -2.
and if x equal to -1 then x equal to 0, यानी x की दो वैल्यूज आ गई ये वाले, ठीक है। अब नेक्स्ट फ्रॉम द इक्वेशन इज दिस y इक्वल टू 1 अपॉन x माइनस 1, y इक्वल टू 1 अपॉन x माइनस 1. Just put the values of x 2 and 0. First put 0. If x equal to 2 then y equal to 1 upon 2 minus 1 1, it remains 1. Okay, when x equal to 0 then y equal to 1 upon 0 minus 1, it is equal to the minus 1. So now points of contact. Points of contact. Contact means tangent. जहाँ tangent बनेगा वो point of contacts क्या है? एक हो गया 2 1 और दूसरा है 0 minus 1. These are the 2 points. अब हम लोग को क्या बनानी है? इक्वेशन ऑफ कर्व. इक्वेशन ऑफ कर्व. तो इक्वेशन ऑफ कर्व क्या बनेगी? नहीं, इक्वेशन ऑफ टेंजेंट्स बनेगी, नॉट द कर्व. इक्वेशन ऑफ टेंजेंट्स. इन दो पॉइंट्स पे हमको टेंजेंट निकालने हैं. तो इक्वेशन ऑफ टेंजेंट होता है y माइनस वाई नॉट, ओके, एफ डैश एक्स, एक्स माइनस एक्स नॉट. तो y माइनस वाई नॉट, फर्स्ट पॉइंट इज दिस y माइनस 1 इक्वल टू -1 एंड x माइनस 2. Now solve x minus x, x plus y plus x equal to, it is equal to 2 minus 1, it is equal to minus 3 equal to 0. ये फर्स्ट इक्वेशन हो गई. और सेकंड क्या बनेगी? y minus y नॉट, y नॉट इज -1, y minus 1, m is -1 and x minus x naught means x 0. This equation is becomes to x, x इधर आएगा तो x plus y plus 1, x plus y plus 1 equal to 0, plus 1 equal to 0. These are the two equations, first and second. These are the equations of tangents which touches at the point 2 1 and 0 minus 1 to the curve y equal to 1 upon x minus 1. Now question number 11. Question number 11 is find the equation of all lines having slope 2 which are tangents to the curve y equal to 1 upon x minus 3. Same question almost. Okay. Y equal to 1 upon x minus 3. Find differentiation of this slope of the tangent dy over dx. It is equal to the 1 upon x minus 3, 1 या x minus 3 raised to power minus 1 and the differentiation of this. It is equal to the minus x minus 3 raised to power minus 2. It is equal to the minus 1 upon x minus 3 whole square. The given that question in question 1 upon x minus 3 whole square equal to slope is 2. Now solve 2 into x minus 3 whole square equal to minus 1. यानी x minus 3 whole square equal to minus 1 by 2. Okay, x minus 3 equal to minus, अब स्क्वायर रूट करेंगे which is not possible. x minus 3 equal to under root minus 1 by 2 plus minus, which is not possible. ये तो इमेजिनरी नंबर है इसीलिए which is not possible. तो जब ये वैल्यू ही निकालना पॉसिबल नहीं है, एक्स कोऑर्डिनेट ही नहीं निकाल सकते, तो आगे टेंजेंट क्या बनेगा? नहीं बनेगा. तो लिख देंगे देयर इज नो टेंजेंट, नो टेंजेंट to the given point, to the given curve, not the point, given curve having slope 2. ऐसा कोई कर्व नहीं है जिस पर कि ऐसा कोई टेंजेंट नहीं है इस कर्व के ऊपर जिसका कि स्लोप क्या आ जाए 2. इट इज नॉट पॉसिबल बिकॉज दिस नंबर इज इमेजिनरी नंबर. क्वेश्चन नंबर 12.
Question number 12 is find the equation of all lines having slope 0 which are tangent to the curve y equal to 1 upon x square minus 2x plus 3. Okay, slope 0 and y equal to this. Y equal to 1 upon x square minus 2x plus 3. This is the equation of the curve. Now find slope. Slope is dy over dx. Now differentiate. So it is dx square minus 2x plus 3 raised to power minus 1 d over dx of this. This can be written in the form of that. So we can write minus x square minus 2x plus 3 raised to power minus 2 and d over dx of x square minus 2x plus 3. It is equal to the minus 2x minus 2 divided by x square minus 2x plus 3 whole square. Okay, and according to the question slope equal to 0. Now dy over dx equal to 0. Put in this minus 2x minus 2 upon whole square equal to 0. Equal to 0 means minus 2x minus 2 equal to 0. It means x equal to 1. Minus 2 common लेंगे, x equal to 1. Now the y equal to, when x equal to 1 is y equal to 1 upon x square minus 2x plus 3. Put x equal to 1, so it is 1 upon 1 square minus 2 into 1 plus 3. 4 minus 2, it means it is equal to the 1 by 2. Now the point of contact. Tangent hand with slope is 0. The point of contact. जहाँ पर टेंजेंट बन रहा है वो पॉइंट क्या हो गया 1 by 2. ओके, एंड स्लोप इक्वल टू 0. यहाँ पर स्लोप क्या है 0 है. नाउ द इक्वेशन ऑफ द टेंजेंट इज y माइनस y नॉट यानी 1 by 2 x इक्वल स्लोप इंटू x माइनस 1. y माइनस y नॉट इक्वल टू f dash x या dy over dx or the slope x minus x naught. It means y minus 1 by 2 equal to 0. This is the equation of slope. Okay, y minus 1 by 2 equal to 0. Question number 13. Find the points on the curve x square by 9 plus y square by 16 equal to 1 at which the tangents are parallel to x axis and parallel to y axis. Points on the curve. The equation of the curve is x square by 9 plus y square by 16 equal to 1. Now differentiate. So differentiation of this is 2x by 9 plus 2y by 16 and dy over dx equal to 0. Differentiate all equation. Okay, यहाँ लिख देंगे differentiate with respect to x. Okay, so now dy over dx equal to, from this equal to minus and cut, it is equal to minus 16x by 9y. इसको सॉल्व करेंगे तो क्या आएगा minus 16x upon 9y. 2 कैंसिल हो जाएंगे, आ जाएगा. ठीक है. इफ नंबर 1 टेंजेंट इज पैरेलल टू x एक्सिस, अगर पैरेलल है x एक्सिस के टेंजेंट तो क्या हो जाएगा dy over dx इक्वल टू 0. पैरेलल होता है तो dy over dx 0 है. इसका मतलब minus 16x अपॉन 9y इक्वल टू 0. तो यहाँ से क्या पता चल रहा है x इक्वल टू 0. जब x इक्वल टू 0 इसमें डालेंगे तो यहाँ से क्या आएगा देखिए, इन द कर्व x स्क्वायर बाई 9 प्लस y स्क्वायर बाई 16 इक्वल टू 1. इफ x इक्वल टू 0 देन y स्क्वायर बाई 16 इक्वल टू 1, यानी y स्क्वायर इक्वल टू 16. तो y इक्वल टू प्लस माइनस 4, यानी 2 पॉइंट्स आ जाएंगे यहाँ से. कौन से 2 पॉइंट आएंगे 0,
4 0 -4। ठीक है, तो यहाँ से क्या आएंगे, पॉइंट्स ऑफ कॉन्टैक्ट, जहाँ पर टेंजेंट पैरेलल हो जाएगा, पैरेलल टू एक्स एक्सिस, इक्वल टू 0 ± 4। Next, first is 0 ± 4. These are the next parallel to y-axis. If tangent parallel to y-axis. अगर पैरेलल है तो कंडीशन क्या होती है, dy/dx इक्वल टू इन्फिनिटी। अब इसको रेसिप्रोकेट करेंगे तो क्या हो जाएगा, dx/dy इक्वल टू 0। रेसिप्रोकेट करने पर लिख देंगे यहाँ पर रेसिप्रोकल dx/dy इक्वल टू 0। इट मीन्स dy/dx हमारे पास क्या था, -16x/9y, और इसको उल्टा कर देंगे तो ये क्या हो जाएगा, 9y/-16x इक्वल टू 0। तो फिर यहाँ से क्या निकल के आएगा, y इक्वल टू 0। ये क्रॉस में जाएगा 0, y इक्वल टू 0। फिर पुट इन द इक्वेशन 1। इक्वेशन ऑफ द कर्व इज x²/9 + y²/16 इक्वल टू 1। पुट y इक्वल टू 0, इट मीन्स x²/9 इक्वल टू 1, x² इक्वल टू 9 and x इक्वल टू ±3। नाउ द पॉइंट्स ऑफ कॉन्टैक्ट्स इक्वल टू +-3 and 0. These are the coordinates where the tangent parallel to the y-axis, and 0 ± 4, here is the tangent parallel to x-axis. Okay, question number 14. Find the equations of the tangent and normal to the given curves at the indicated points. कर्व दिए हुए हैं और पॉइंट ऑफ कॉन्टैक्ट दिए हुए हैं, इन पर हमको टेंजेंट और नॉर्मल निकालना है। द फर्स्ट कर्व इज x⁴ - 6x³ + 13x² - 10x + 5. Find the equation of tangent and normal at the point 0 and 5. The first, dy/dx. It is equal to the 4x³ - 18x² plus 26x minus 10. Okay, now the value of dy/dx at 0 5. 0 5 means x equal to 0. Put x equal to 0, then dy/dx और the slope, इसको slope भी कहते हैं m, 4 0 cube minus 18 into 0 square plus 26 into 0 minus 10. It is equal to the minus 10. Okay, this is the m. The slope of the normal, ये तो टेंजेंट का हो गया, और स्लोप ऑफ नॉर्मल क्या होगा इसका, -1/m. It is equal to the -1 upon -10, 1/10. Now equation of tangent at point 0 5 क्या हो जाएगी, y - y0 यानी y - 5, m इक्वल टू टेंजेंट के लिए m कितना, -10 and x -0. It is equal to the 10x plus y minus 10x plus y minus 5 equal to 0, or the 10x plus y equal to 5. And the equation of normal at point 0 5, it is equal to the same, y minus y0 यानी y minus 5, 1 upon m. 1 upon m is 1/10, x minus 0. It is equal to the 10y minus 5 equal to x. So you can say x minus 10y plus 5 equal to 0. Okay, x minus 10y plus 5 नहीं, sorry, 50, 10y 50
x minus 10y plus 50 equal to 0. Now the second one. Second is y equal to x raised to power 4. Same question. 6x cube plus 13x square minus 10x plus 5 at 1, 3. The points are different. Okay. 10, 1, 3. Same dy over dx. 4x cube minus 18x square plus 26x minus 10. Okay. Now the value at x equal to 1. Dy over dx at x equal to 1. Put 4 into 1 cube, 18 into 1 square, 26 into 1 minus 10. It means 4 minus 18 plus 26 minus 10. 30 minus 28. It is equal to the 2. Say it is m. And the slope of the tangent is m. And the slope of the normal. ये तो tangent है. And slope of normal. पेन खत्म. Slope of normal equal to minus 1 by m. It is equal to the minus 1 by 2. Now equation of tangent. At point 1 by 1, 3. It is equal to the y minus 3, m is 2, x minus 1. So we can say that 2x minus y minus 2 plus 3, yani it is 1. Yani 2x minus y plus 1 equal to 0. Next, equation of normal. At point 1, 3. Same question. It is equal to y minus 3, 1 by 2. Normal का टेंजेंट क्या है? माइनस 1 by 2 and x minus 1. Multiply 2y minus 6 equal to minus x plus 1. It means x plus 2y minus 7 equal to 0. Y equal to x cube at point 1, 1. Okay, this is the third one. Now dy over dx, it is equal to the 3x square. Now value of dy over dx at point 1, 1 equal to 3 into 1 square. It is equal to 3. Okay. Now slope is at x equal to 1. The slope is 3. M equal to 3. Now normal, slope of normal. At 1, 1 is minus 1 by 3. Now equation of tangent. Y minus the point 1, 1 है, y minus 1 equal to 3 x minus 1. Okay, y minus 1 m x. Now solve y equal to 3x minus 3 plus 1, it will minus 2. This is the equation of tangent. And equation of normal. Y minus 1 equal to minus 1 by 3 x minus 1. Now solve 3y minus 3 equal to minus x plus 1. Now you can say that x plus 3y, इसको इधर ले आएंगे, minus 4 equal to 0. This is the equation of normal. Next, fourth one is y equal to x square at 0, 0.
First dy over dx equal to 2x. Now value of dy over dx at the center origin 0 0, it is equal to 0. 2 into 0 0. It means m. If the slope is 0, okay, so now equation of tangent की इक्वेशन 0 0 पे क्या होगी, y minus 0, slope is 0, x minus 0, it means y equal to 0. And the normal equation of normal at 0 0 is y axis. अगर y equal to 0, it means क्या हो जाएगा, y axis. नॉर्मल किस पे होगा, y axis पर. नॉर्मल की इक्वेशन हो जाएगी y axis and the tangent equation y equal to 0. Now fifth one, x equal to cos t, y equal to sin t at t equal to pi by 4. First dx over dt, it is equal to the minus sin t, and dy over dt equal to cos t. Now dy over dx equal to dy over dt divided by dx over dt. It is equal to the cos t divided by minus sin t equal to the minus cot t. It is equal to cot t. dy over dx when t equal to pi by 4. It means minus cot pi by 4. It is equal to the minus 1. So minus 1 is the slope. M equal to minus 1. And slope of normal, जब इसका -1 है तो स्लोप ऑफ नॉर्मल क्या होगा, 1/m होता है, -1/m ऐसे करके. तो ये क्या होगा, -1 by -1, इट इज इक्वल टू 1. द पॉइंट, अब पॉइंट क्या बन गए, एक्स वाई कॉस टी एंड साइन टी. पॉइंट क्या है एक्स वाई पर, पॉइंट इसमें नहीं दिए हैं लेकिन एक्स और वाई दिया हुआ है, इसका मतलब पॉइंट क्या है, कॉस टी एंड साइन टी. अब इस पर हम लोग इक्वेशन निकालेंगे. तो टी कितना दिया हुआ है, पाई बाई 4, तो हम लोग लिख सकते हैं कॉस पाई बाई 4 एंड साइन पाई बाई 4. द वैल्यू ऑफ द कोऑर्डिनेट्स इज, ये क्या हो गया, 1/√2 एंड 1/√2. दीज आर द पॉइंट्स एक्स वाई. एक्स इक्वल टू 1/√2, वाई अपॉन 1/√2. अब निकालेंगे इक्वेशन. इक्वेशन ऑफ टेंजेंट क्या हो जाएगी, y माइनस 1/√2, m इक्वल टू -1, x माइनस 1/√2. ओके, द इक्वेशन ऑफ टेंजेंट क्या बनेगी, y माइनस 1/√2 -1. अब इसको सॉल्व करके लाइएगा तो क्या होगा, y यानी x प्लस वाई, x प्लस वाई इक्वल टू +√2 प्लस यानी 2/√2, 2/√2. और नाउ रेशनलाइज करेंगे तो ये क्या आएगा, √2. तो इक्वेशन ऑफ टेंजेंट क्या हो गई, x प्लस वाई इक्वल टू √2. और इक्वेशन ऑफ नॉर्मल ऑन द पॉइंट्स 1/√2 एंड 1/√2. तो y माइनस 1/√2, 1/m माइनस 1/m 1, x माइनस 1/√2. अब इसको सॉल्व करेंगे तो -1/√2 -1/√2 कैंसिल, y इक्वल टू x. दिस इज द इक्वेशन ऑफ द नॉर्मल.